Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in the last lectures we have discussed how the harmful microorganism they cause disease, how the disease is spread by insects, how insects acts as a carrier. Now in this lecture we will discuss about the few common diseases that are caused by microorganism and what is their mode of transmission and how they are prevented, how they can be prevented. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Now first disease is your cholera. Now cholera is a very common disease and this disease is caused by bacteria, and this disease is transmitted by contaminated food or water. This is the transmission. Now what are the preventive measures to prevent cholera? That is कि do not allow dirt, water or dust to accumulate in your surrounding. So simply इसको prevent करने का एक ही तरीका है, जो भी because this is prevented by this is transmitted by water or food. तो contaminated food और water से होगा, and how this food and water will be contaminated by the insects. तो हमको क्या करना है, हमको कुछ भी गार्बेज हुआ वो कलेक्ट नहीं होने देना है, एंड सेकेंडली जो भी फूड है वाटर है उसको कवर्ड करके रखना है, सो दैट द डर्ट और डस्ट डू नॉट एक्यूमुलेट और इंसेक्ट्स they do not in this they pollute the water and food. Now next is your tuberculosis, which is caused by bacteria and the mode of transmission is air. Okay, and the preventive measure is immunization by BCG vaccine. So BCG vaccine जो है it is given to a small child. as you all know, ये BCG का टीका लगता है जब बच्चा जो है 15 डेज़ का होता है. ओके, सो ये जो है ये ट्यूबरक्लोसिस को भी प्रिवेंट करता है. ओके, एंड if a person has this disease, तो you can prevent yourself इन क्लोज कॉन्टैक्ट. हमें उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है, बिकॉज दिस डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय एयर. एयर में इसके ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड दीज ड्रॉपलेट्स व्हेन यू ब्रीथ, दीज ड्रॉपलेट्स मे बी वाइल ब्रीथिंग इट मे गेट इनटू योर बॉडी एंड इन्फेक्ट यू. Now next is your typhoid, which is again caused by bacteria and the mode of transmission is water and air. So now this can be prevented by not allowing human excreta or waste to collect. So this should be disposed, प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए. इनका जो भी गार्बेज है, जो भी एक्सक्रीटा है, वो प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए एक पिट में. ओके, अवे फ्रॉम द वाटर सोर्सेज एंड कवर्ड विथ साइज. मीन्स वाटर सोर्स से बिल्कुल दूर होना चाहिए, क्योंकि दे कंटेमिनेट द वाटर, और उसको पिट में डग करने के बाद उसको सैंड से कवर कर देना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ हाउ द टाइफॉइड कैन बी प्रिवेंटेड. नाउ नेक्स्ट इज़ कॉमन cold, which is caused by a virus. So virus is responsible, and its transmission is again air. So the only preventive measure is keeping yourself away from the infected person. इन्फेक्टेड पर्सन से हमें अपने आप को दूर रखना है. नेक्स्ट इज़ योर चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स. दैट इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़ एंड द ट्रांसमिशन इज़ एयर एंड कॉन्टैक्ट. नाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड by using wash cloth regularly, keep yourself clean, do not handle food if you are ill. So suppose a person is infected by this disease, so that person we should avoid using the clothes, regular clothes, or avoid ourselves to be in close contact. ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, और वॉशिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, क्लीनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, एंड इफ़ यू वांट टू मेंटेन द डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. नेक्स्ट इज़ योर मीज़ल, विच इज़ अगेन अ वायरल डिजीज़ transmitted by air. So again the same preventive measures as we have discussed in chicken and smallpox, that do not use patient's clothes and other belongings, and wash such clothes separately and keep yourself away from such person. Now polio, it is a viral disease and it is transmitted by air or water. So avoid physical contact with the infected person. So this is how you can keep yourself free
prevent this disease. Hepatitis B, it is a virus disease transmitted by water. So drink boiled water, and vaccination is the only preventive measure by which this disease can be prevented. Now rabies is a virus disease and it is caused by bite of an infected dog. ठीक है, dog अगर उसको rabies है and that dog bites anyone, then that person will be infected by rabies. So the preventive measures is wash the bite with soap and water. If any such dog has bitten you, then you should wash it properly with soap, then apply antiseptic and take full course of antibodies वैक्सीनेशन. और हमें ये तो हमें करना है जो घर पे हम कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द फुल कोर्स ऑफ वैक्सीनेशन. ठीक है, इसका वैक्सीनेशन होता है जो कि हमें पूरा डोज लेना होता है. नाउ लास्ट इज़ योर डायरिया या गैस्ट्रो इंट्राइटिस भी इसको बोलते हैं. एंड दिस इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स. So all these are responsible for causing this disease, and it is transmitted by again food and water, contaminated food and water. So how you can prevent? You should keep food covered, wash your hands before taking meal, and then after going to toilet also you should wash your hand very cleanly, means very properly, and always drink clean water. Okay, so these are the preventive measures by which the disease can be prevented. Okay, so this is all student. Thank you everybody.